Subscribe to the channel Educate Sada and press the bell icon for the latest videos. Thank you. Regarding the population, and it is one of the variable, and this for showing this variable the in the map using the dot. So you can see here this there is a lots of the dots, and that dots are used to represent the population in a map. So class, what is a dot dot method? The dot method means what? So showing the variables using the dots. Okay class, showing the variables by using the dot in a map. So this map any method is known as a dot method. Okay, so I hope you understand what is a dot method. So showing the variables by using the dot, this is known as a dot method. So dot map is prepared using the statistical data. So for preparing the dot method, there is also need a statistical data. It means a numerical data you want. And while preparing the dot map, only data gathered through the counting is used. Okay, while preparing dot method यानी डॉट मैप, वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रिपेयर यू प्रिपेयरिंग अ डॉट मैप, जब आप ऐसा डॉट मैप बनाते हो यानी इस तरीके से डॉट मैप जब प्रिपेयर करते हो तो यू नीड अ numerical data. So you can see here each dot have a thousands population. So this is a numerical, and 50,000, 1 lakh, 2 lakh, 5 lakh. तो what it is, ये क्या है? तो सब एक न्यूमेरिकल डेटा है. ओके क्लास, तो दिस डेटा इज नोन एज अ स्टैटिस्टिकल डेटा. तो बाय द काउंटिंग, तो इंफॉर्मेशन यानी गैदर्ड थ्रू काउंटिंग इज अ यूज्ड. तो दिस यानी आप ये जो डेटा ओनली द डेटा गैदर्ड, आप ये डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हो? बाय अ काउंटिंग, आपको गिनना पड़ेगा. एंड द वे ऑफ वेरिएबल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द रीजन, यानी डॉट्स आर यूज्ड टू सोन इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ मैप. तो इट मीन्स द वेरिएबल सोन इन अ मैप बाय यूजिंग द डॉट. आप डॉट का इस्तेमाल करके शो करते हो. फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन and the distribution of the cattle. Okay, so one of the example here available, that is the population distribution. For showing the population distribution in the map using the dots, ये dots का इस्तेमाल किया है. Okay class, so as like that one other example is given, that is the cattle. तो cattle means जो भी जानवर है वहाँ के, जो भी गाय भैंस बकरी वगैरह जो भी होंगे, तो उनको शो करने के लिए भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. Now to show the distribution through the dot method, the value of a dot has to be determined. Okay, so if you show the distribution through the dot method, अब if you show the variable with the help of the dot, अगर आप क्या कर रहे हो, distribution वो variables को show कर रहे हो by using the dot, then the value यानी each dot have a some specific values or the numbers, यानी फिर कुछ numbers होंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि according to the size the value of a dot is determined. Okay class, so each dot have a thousands yani 10,000 population, and the size of the dot yani if the size is a smaller, the 50,000, that value of the dot is a 50,000. if the it is little bit bigger than the first, then it is considered as a 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh. So what is that, ये क्या है? तो this give the information about the value of a particular dot. तो इस तरीके से अब ये जो बड़े डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, सबसे बड़ा वाला, तो दैट shows their value, that is 5 lakh. Okay class, तो इस तरीके से each dot have a value and that value is depend upon their sizes. ये उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है. Okay class, so to do that, the lowest and the highest value of the given a variable in a regions are taken into the consideration. Okay, तो यानी how you can decide the values of the dots, आप कैसे इसका डिसाइड करोगे? तो the minimum and the maximum population in a regions, उस region में population minimum कितना है, maximum कितना है. Suppose क्योंकि मैप्स जो है आप वो लिमिटेड पेज में ही बनाने वाले हो, तो सपोज इफ यू हैव टू शो, अगर आपको शो करना, इफ यू वांट टू शो द मोर पीपल्स इन दिस मैप, अगर आप इसके अंदर बहुत सारे लोगों को दिखाना चाहते हो, दैट इज अप टू द 5 लाख,
तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ 5 लाख डॉट इन दिस मैप. आप उसमें 5 लाख डॉट बना ही नहीं पाओगे, बिकॉज द साइज ऑफ द मैप इज़ अ स्मॉल. तो इन यानी हाउ कैन यू कैन एडजस्ट, यानी कैसे आप एडजस्ट करोगे, तो बाय गिविंग द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द साइज, देन यू कैन शोज ऑल दिस डॉट इन दिस मैप. आप उस डॉट के थ्रू क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा डेटा, चाहे वो डेटा कितना भी होने दो, यू कैन शो इन द मैप. आप मैप में दिखा सकते हो बाय गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज. ओके क्लास. नाउ according to the number of dots are determined, and also we need to consider the size of the dot. I already shown in that map. So there is a you can see here, so this is the different size of the map, and according to the size the each dot have their different values. उसके अलग अलग values है. Okay class. This is the 50,000, 1 lakh, 2 lakh, 5 lakh. Okay, so this is depend upon the size. So value of each dot have a depend upon their size, the density of the variables and the scales of the map, and also the density मतलब वो कितना सारा आपको दिखाना है. समझो there is a density of a population is a very large, यानी बहुत ज़्यादा है, तो then you have to give a more, यानी you have to take a यानी more value और large value of each dot. आपको क्या करना है, हर एक डॉट की वैल्यूज़ को ज़्यादा लेना पड़ेगा. Okay class, because if you show the 10,000 population in यानी by using the similar dot, so it is not possible to shown in a map. वो possible नहीं है कि आप 10,000 डॉट इसके अंदर बना सकते हो. So therefore according to the size you give a different values, and through these values you can show number of population in this map. Okay, so therefore you can say according to the number of the any dots are determined, and also we need to consider the size of the dot, density of the variables, and the scale of the map. Okay, scale यानी map कितना बड़ा है, and the number of the dots to be given for the value of variable each. The sub administrative unit need to be decided first. Sub administrative unit need to be decided. It means यानी आपको जो यानी मेन पार्ट दिखाना था उसके अलावा और क्या छोटे छोटे डिविजन्स अगर उसको दिखाने हैं, तो यानी देयर इज अ सम स्मॉल डिविजन्स ऑफ यानी पर्टिकुलर डिवीजन. तो पर्टिकुलर डिवीजन का भी एक स्मॉल डिवीजन होगा, तो दैट कैन बी शोन बाय अ डिफरेंट वे. आपको उसको डिफरेंट वे से दिखाना पड़ेगा. इट मीन्स गिविंग अ डिफरेंट वैल्यूज, उसको अलग वैल्यूज देने पड़ेंगे. तो द नंबर ऑफ द डॉट्स इज गिवन टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नीड टू बी डिसाइडेड फर्स्ट, एंड द फॉलोइंग यानी precautions should be taken while using the dot method यानी for map. यानी if you are preparing यानी if you are going to prepare a dot map, यानी आप क्या करें, डॉट मैप प्रिपेयर करने हो, there is a need to be take a certain precautions, यानी कुछ सावधानियाँ आपको लेनी है. the size of the dot should be a uniform. यानी if you so by using this dot 50,000, तो यानी वेयर एवर यू यानी पॉपुलेशन इज अ 50,000, तो द साइज ऑफ द ईच 50,000 डॉट इज अ यूनिफॉर्म. यानी जहाँ जहाँ पर 50,000 होगा वहाँ पर सेम साइज होने चाहिए. ओके क्लास. जहाँ पर भी 5 लाख होंगे तो वहाँ के डॉट का जो वैल्यू होगा वो साइज जो होगा तो अकॉर्डिंग टू दैट सिमिलर ही होगा. ऐसा नहीं कि मतलब 5 लाख यानी 5 लाख है और यानी देयर इज 4-5 लाख, तो यू इफ सम वन फॉर वन यू यूज दिस साइज, and for second for you use this size, and for third you use this size. So if you using different size for showing the 5 lakh, so person cannot able to understand the population of that particular region. It means there is a uniform size of the dot. यानी आपको ये precautions लेना है कि if you the size of the each dot should be a uniform, okay, according to their values. And the second, the distribution of a physiography, water sources, transportation system, etc. of the regions should be considered while placing the dot on a map. So what yani whenever you are using the dot map method for preparing the dot map, then the distribution of a physiography means the mountainous regions, land areas, plateaus and वाटर बॉडीज, तो दैट ऑल्सो कंसिडर्ड इन दैट, यानी उसको भी आपको ध्यान में देना है. यानी फिजियोग्राफी मीन्स माउंटेनियस, प्लेट्यूज, हिल, प्लेन्स एट्सेट्रा.
okay, and physical यानी water sources, transportation system. तो these are यानी these things can be a considered यानी these things should be a considered while placing the dot map, okay. And while showing the population distribution, rural population in a is shown by the dot and the cities are used to show the urban population, okay class. तो यानी आप क्या करो, डिफरेंट थिंग्स के भी यूज़ करो, यानी while showing the population distribution of a rural population is shown by the dot and the circle are using for यानी use the different shape. आप different shape की यूज़ कर लो. Like suppose आप rural and urban दो population को एक ही मैप में दिखा रहे हो. Suppose you shows the two variables in a one map, then use a different shape. डिफरेंट शेप मीन्स अलग अलग रूप का इस्तेमाल, डिफरेंट फॉर्म का इस्तेमाल करो. सपोज फॉर यानी फॉर द रूरल पॉपुलेशन यू प्रिपेयर लाइक दिस एंड फॉर द अर्बन पॉपुलेशन यू प्रिपेयर लाइक दिस, ओके क्लास. तो आप ऐसे डिफरेंट क्या करो, शेप्स का यूज़ करो. तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर बाय यानी वाइल प्रिपेयरिंग द यानी डिस्ट्रीब्यूशन मैप, द रूरल पॉपुलेशन शोन बाय द डॉट एंड द सर्कल बाय द अर्बन पॉपुलेशन. The dot method is the most suitable for the variable which is freely scattered across the region, and it is very useful to show the variable, such type of a variable which is scattered across. It means which is distributed all the places, जो हर जगह पर बटा हुआ रहता है. scattered freely scattered across यानी जिसको बांटा जा सकता है आसानी से हर रीजन्स में, ओके क्लास. तो आई होप यू understood the dot maps, okay class. Okay, dot method, what is a dot method, you understood very well. Morning class. Now this is the second method of the distribution of the map, that is choropleth method. So we already discussed the first method, that is a dot method. So dot method means I already explained, when the data shown by using the dot, आप डेटा को शो करते हो through the dot, then it is said to be a dot method. Now we will discuss about the choropleth method. So choropleth method means what? So when the data showing by the using a tint of colors, it means colors का इस्तेमाल करके आप शो करते हो उसको. तो here you can see in the index, तो by using the pink color, and the pink color in that the dark pink and little डार्क पिंक, एंड उसके बाद लेस डार्क लाइट पिंक. तो इस तरीके से उस कलर्स को यूज़ किया. तो बाय द यूजिंग द कलर्स शोइंग द वेरिएबल्स, ओके. एंड आल्सो द सेकेंड वे टू शोइंग द वेरिएबल, दैट इज द ड्राइंग अ पैटर्न. तो दिस इज द पैटर्न, ओके. तो दिस इज द पैटर्न. तो यहाँ पर मैंने ये बोला कि द choropleth मेथड मीन्स वॉट, व्हेन द वेरिएबल्स ऑफ अ डेटा शोन विद द हेल्प ऑफ द शेड्स और द कलर्स, okay, or the drawing of patterns. So this yani on the basis of these things whatever map is prepared, that is the choropleth map या फिर choropleth method, okay. So now we will discuss in that. So in this map the data regarding the various geographical variables is shown by the sets or the tint of various colors. I already explained that point. तो इट मीन्स द डेटा ऑफ अ वेरिएबल्स यानी वेरियस जोग्राफिकल वेरिएबल्स. so geographical variables I already explained what is the geographical variables, that is the population, rain, temperature, cattle, crops. so whatever the material found in that area or a particular region, so that is considered as a variable, okay. so it is shown by the sets or the tint of कलर्स, ओके. तो शेड्स और द टिंट ऑफ द कलर्स यानी ऐसे डिफरेंट कलर्स के आप यूज करके क्या करते हो, उसको शो करते हो. एंड ऑल्सो बाय ड्राइंग द पैटर्न. सो दिस इज द पैटर्न, ओके क्लास. नाउ while making such map, the data used for different variable is obtained through the various process such as measurement, surveying, okay. to by whenever you preparing the map with the help of the choropleth method, तो whatever data, तो data is required, जो data आपको required होती है, तो this is the data, okay class. तो this is the data of the population density, okay class. तो data which is present in a numerical form or the statistical form, तो that data can be collected. ये data कैसे मिलेगा? that data can be collected by the measurement, okay.
यानी आप उनका मेजर करके पता करके, इफ सपोज यू सोज द यानी यू वांट टू शोइंग द वेरिएबल इन अ लेंथ, अगर लेंथ में एरियाज वगैरह को आप शो करना चाहते हो, दैट इज यानी हेल्प विद द हेल्प ऑफ दैट शोन विद द हेल्प ऑफ द मेजरमेंट। एंड सर्वेइंग मीन्स अ सेंसस करके, यानी उनका काउंटिंग करके, दिस इज द सर्वेइंग। आप उनके पास जा करके उनके काउंटिंग करके पता लगाते हो। तो इन दिस मेथड द ओनली वन वैल्यूज इज अ गिवन टू द वन सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन अ रीजन। ओके, तो in a one sub administrative units they give the only one values, that is if you consider, if you take the point, if you take the point that is a, if you take the point that is a dark pink, so this dark pink given a greater than 400, and if you take a little bit light little dark as compared to greater than 400, then the given a value is a 301 to 400. So it means if each data given a and each sub administrative unit give a one value, उसको एक value दी जाती है। Okay, now one value is given to the one sub administrative unit in a region, okay, particular region में, वो particular area में। The smallest and the largest value of a given data of the variable is taken into the consideration, and smallest and the largest, तो okay, तो minimum and the maximum, तो here the यानी giving a one value to the each variable of a particular regions, then smallest and the largest, so this is the smallest population density in a particular region and the largest population density, that is greater than 400, okay, so it is less than 100 and the more than 400, so this is the maximum यानी largest and the this is the smallest, तो ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर अगर लेस देन 500 बोला है, तो द एरिया दैट इज चिखलदरा, तो इन दैट एरिया तो मिनिमम दैट इज फ्रॉम 1 to 100, यानी 1 से 100, तो हियर द मैक्सिमम वैल्यू इज 100 फॉर द चिखलदरा। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर द 100 and below that people, yani it means the in a Chikhaldara the people live less than 100, okay, so minimum to maximum, that point take into the consideration while showing the data। okay, so of when you taken into the consideration, after that the 5 to 7 classes are made and each reasons given are like this type। it means for example if you seen the light pink, that is less dark pink, that is 301 to 400, the area that is Anjangaon Surji, so Anjangaon Surji, no, this is not Anchalpur, okay, Achalpur, so Achalpur, in that the population density is 301 to the 400, it means minimum population is 301 and maximum population is 400, so it means there is a given a lowest value and the largest value in this area। okay, so as like that every regions have their minimum and the maximum value। okay, so 5 and they make any when they in surveying all these regions of a particular Amravati district, okay, so then they classify the 5 to 7 classes, so you know you can see here this is the one class, second, third, 4, 5, okay, so give the 5 to 7 classes, so each classes is assigned a tint and each classes means जितने भी class बने हैं, जितने भी उन्होंने class बनाया है, तो that class given a tint of colors मतलब each class given a one of the colors so that they can identify, जिसकी वजह से आप उसको पहचान कर पाओगे या पहचान सकते हैं। so that is which is the area where the population density is less than 100, so it is a light pink। okay, and when you move forward, यानी जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, move upward, then the color light pink color converting into the dark, and where the population density is greater than 400, then the dark pink। okay, so each classes given a specific colors or the tint of colors and the black and white shade pattern, and if you shown the map with the by making the pattern, जब आप pattern के through show कर रहे हो, तो each यानी numbers is the classes given a
नंबर ऑफ शेड्स यानी ब्लैक एंड वाइट शेड. अब ब्लैक एंड वाइट शेड में इसको शो कर देते. दिस इज द white or the lines which are drawn that is in a black color. Okay, so this is also the density of the population, but it is drawn in a pattern form. Okay class, so black and white pattern, and the shades of the pattern become a darker with the increasing a value given a variable or a drawn accordingly on a map given a classify. So when the shades color become a dark, so when you move when the values given a value become a increase. So when the given value increase, yani when 100 100 200 100 200 200 1 to 200 300, so when the number become increase, yani 100 to 400, the colors of the sets become a darker. Okay, so it is a light, it is little bit more dark as compared to below. तो इस तरीके से that become a यानी dark आफ्टर बाय इंक्रीजिंग द नंबर. जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे वैसे उनके कलर्स गिवन अ वेरिएबल आर यानी ड्रॉन अकॉर्डिंगली द मैप इन अ गिवन क्लासिफिकेशन. ओके, इन द गिवन क्लासिफिकेशन दैट बिकम अ डार्क बाय इंक्रीजिंग द नंबर. आई होप अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स. नाउ in the figure 1.2a and the 1.2b, the population density map Amaravati district using the color shade and the black and white patterns. So this is the 1.2a and this is the 1.2b. Okay, so here the color tint of colors are using, or the shades of the colors are using, and in that they are using the shades. Okay class, and asking the some questions. So read any one map in a details and answer the following question. One of the map you can take and give the answer. After discussing about the chloroplathe method, so we have some question related with the chloroplathe method. So by seeing the map and answering the question, the name of the taluka having the population density between 301 and the 400% per square kilometer. So what is the number of that area, or that population density of that area? So 301 to 400. Okay, so between that to search in a go in a index, आप index में जाओ. So this is the less than 100, 101 to 200, 201 to 300, and 301 to 400, and this is the greater than 400. So our number is a match with the 301 to 400. So what is the sets patterns in the class, yani in this class? So this pattern shows the similarities in the map that is with the Anjangaon Surji. वो अंजनगांव सुरजी से मैच करता है. That's why the answer of this question, where the population density is a 301 to 400, so answer of that question is the Anjangaon Surji. Okay class, so what is the answer of the first question? That is Anjangaon Surji. What is the density of the Amravati taluka? So density, it means the population, maximum population in Amravati district, so that is the greater than 400. So this is the population density of the Amravati district. Okay class, so second question's answer is the 400. Okay, now the third question, that is name of the taluka having the population density less than 300% per square kilometer. So it is the less than 100, so we cannot take this number because we want a less than 300. Okay, so this is the 300 and it is a 201, and it is a 301, it means it is a greater than 300. So we take this class, हम लोग इस class को लेंगे, and in that, so which type of any whatever patterns drawn that look in the map, आप उसको map में देखो और identify करो कि with this pattern shows the similarities with which region, तो कौन से region से similarities show करता है. तो if you see Dharni, okay, so Dharni is shows the similarities with the 201 to 300. So this is a less than 300, the population density of the Dharni. Okay, Dharni हो गया. उसके बाद चंदूर बाजार, नाव मौरसी. ओके, उसके बाद दरियापुर. तो these are the यानी and उसके बाद वारुड. ओके, तो these are the answer. तो which of यानी name of the talukas, तो which taluka have the less than 300? तो धरनी. ओके, धरनी, दरियापुर, चंदूर बाजार, मौरसी and the Warud. Okay, so this area have a population density less than 300.
Hope so clear all the questions answer.